अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ुबैर समगल। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से ठीक हूँ। आज हम पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट्स देखने वाले हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर फाइटर जेट हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से हैं। वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, आप जाके ज़रूर विजिट करें। बड़ा ज़बरदस्त चैनल है जिसकी ये वीडियो है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 1. General Dynamics F-16 Fighting Falcon. Considered the backbone of the PAF, the F-16 is a multi-role jet known for its speed, agility, and powerful weapons systems. Pakistan operates variants like A, B, AM, BM, and C, D. Upgraded versions boast advanced radars, electronic countermeasures, and improved cockpit displays. 2. CAC, PAC JF-17 Thunder. Developed jointly by China and Pakistan, the JF-17 is a lightweight, single-engine fighter that offers good all-weather capability and cost-effectiveness. Newer Block 3 variants feature improved avionics, radar, and weapon integration, pushing its capabilities closer to the F-16. 3. Chengdu J-10C. Acquired from China, the J-10C is a larger, twin-engine fighter intended for air-to-air combat and ground attack. It boasts formidable speed, weapon payload, and electronic warfare systems. Its acquisition marks a shift towards heavier, longer-range fighters in the PAF inventory. 4. Dassault Mirage 3V. These French-built jets, while aging, retain significant air defense capabilities thanks to upgrades under Project Rose. They excel in high-altitude interception and are equipped with powerful radar and missiles. Plans are underway to gradually replace them with JF-17s and J-10Cs. 5. Chengdu F-7PG, FT-7PG. Derived from the Chinese MiG-21, the F-7 series forms a significant portion of the PAF fleet. They are primarily used for ground attack and close air support due to their maneuverability and payload capacity. Advanced F-7PG variants feature improved avionics and weapon systems, but are ultimately being phased out in favor of more modern aircraft. गाइस, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।